Okay, friends, welcome. Darshana, Nancy, Sweetie, Sharmila, Swara, Arya, how are you? Then Babu, Chris, Kevin, Tithu, are you ready? Let us start the new point. चलो आज कुछ नया सीखेंगे, which is totally related to our in our everyday life. Our point is diazotization and chemicals reactions of BDC salt, otherwise benzene diazonium chloride salt. Diazotization is nothing, introduction of diazo group. In organic chemistry नाइट्रोजन को हम एजो ग्रुप बोलते हैं. नाइट्रोजन इज नोन एज एजो. Diazo means two nitrogen atoms. And this is diazo group. N double bond N nitrogen possess trivalency property. दोनों side bond open रहेगा. This group is known as a diazo group. Okay. Diazotization. अच्छा, you see diazotization कौन से compound का होता है? Always aniline का diazotization होगा, aromatic amine. Otherwise, it is far better to say primary aromatic amine. It is aniline. What is the reagent which is used for the diazotization? Nitrous acid. Otherwise, you can use NaNO2, a mixture of sodium nitrite and 2 mol HCl. First of all, yes, reaction will take place between NaNO2 sodium nitrite and 1 mol HCl. When the reaction occurred between two substances at that time, positive ion of one substance will react with negative ion of second substance, NaCl. This is the product. Then negative ion of first substance will react with positive ion of second substance, HNO2. This is nitrous acid. Means reaction between NaNO2 and HCl, finally it will gives nitrous acid. The structure formula of nitrous acid is HO single bond and double bond. After giving 180 degree rotation, इसका structure formula ऐसा भी हो सकता है. Now, this nitrous acid, you see 1 mol HCl यूटिलाइज हो गया, अभी 1 mol HCl बाकी है. Now the reaction will take place between aniline, nitrous acid and 1 mol HCl. You see the square H2O, this is H2O. ये नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, इसके भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए. The double bond will form between two nitrogen atoms. And single bond will form. This nitrogen will directly add to this chlorine atom. It will give compound benzene having N double bond NCl. This salt is known as a BDC salt, benzene diazonium chloride salt. This reaction is known as a diazotization. One more thing. Yes, obtained BDC salt will be less stable when the reaction temperature is high. So, to gain more stable salt, reaction temperature should be low. That's why diazotization reaction always carried out at low temperature, 0 to 5 centigrade temperature. If you want to convert in 273 plus 278 Kelvin, you can add Kelvin also. This is the BDC salt.
After diazotization, yes, aniline will convert it into benzene diazonium salt. Now, अभी हमें देखना है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस देखनी है. BDC reactions of BDC salt can be divided in main two parts. First part, yes, CD. C for coupling reaction. It is far better to say azo coupling reaction. And the second one is displacement of nitrogen. ये nitrogen displacement हो जाएगा ऐसी reactions. In displacement of nitrogen, GPB सरस, GPB और सरस. G for Gattermann reaction, P for potassium iodide के साथ reaction with potassium iodide. B for fluoroboric acid के साथ reaction. As for Sand-Meyer reaction, it is also known as SMR. Then reduction reaction, and as for sulfuric acid plus water के साथ की reaction. We will see this reaction, displacement of nitrogen from BDC salt, we will see later on. Today in this lecture, we will see only azo coupling reactions. Yes, azo coupling. Couple, what do you mean by couple? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जा रहे हैं तो उसको हम कपल बोलते हैं. दो पर्सन एक दूसरे के साथ कुछ बॉन्डिंग बंध से जुड़े हुए हैं. यहां भी दो सब्सटेंस एजो ग्रुप जरिए जुड़ते हैं. यहां कुछ होगा, यहां कुछ होगा. एजो कपलिंग रिएक्शंस. BDC salt will react with phenol, beta-naphthol, aniline, and this is dimethylene. This is the derivative of aniline. From aniline, two hydrogen atoms are replaced by two methyl groups. That's why it is known. This is one type of aniline in which both hydrogen atoms are replaced by methyl group. That's why dimethyl-aniline. These four reactions belongs to azo coupling reaction. One more thing. Chemical reactions of BDC salt are always carried out in a liquid state. If you will do the reaction in solid state, the reaction will be explosive. कुछ तोड़फाड़ होगी, कुछ accident हो जाएगा. That's why chemical reactions of BDC salt always carried out in liquid state. अच्छा चलो, फिनॉल को लिक्विड में कन्वर्ट करना. बीटा नेप्थोल, वी शुड हैव टू कन्वर्ट ऑल द कंपाउंड्स इन लिक्विड स्टेट. फिनॉल इज एसिडिक कंपाउंड, बीटा नेप्थोल इज एसिडिक कंपाउंड, एनिलीन इज बेसिक कंपाउंड, डाइमिथाइल एनिलीन इज आल्सो बेसिक कंपाउंड. वन मोर थिंग, एसिड ऑलवेज डिसॉल्व इन ए बेस एंड बेस ऑलवेज डिसॉल्व इन एसिड. Phenol is acidic compound. That's why to prepare a solution we can dissolve phenol in NaOH. NaOH लिखना पड़ेगा. Beta naphthol is also acidic compound. That's why solution of beta naphthol can be prepared by dissolving NaOH. Base में dissolve होगा. Aniline is basic compound. That's why its solution can be prepared by using the HCl. Dimethyl aniline is also basic compound. That's why its solution can be prepared by dissolving in HCl. अच्छा, one more thing. Naphthol. This is one benzene ring. This is second benzene ring. दो benzene ring यदि जुड़ी तो उसको हम नेप्थलीन बोलते हैं. नंबरिंग देना है. यस, स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. Then this is 9, this is 10. 10 carbon atoms are there. Yes,
1, 2, 3, 4 numbering is to be given in IUPAC method, whereas the alpha, beta, gamma numbering is to be given in common method. Which position is known as a alpha? Which position is known as a beta? Yes, ये 1, 8, 5 and 4 ये अल्फा पोजिशन है, साइड वाले बीटा पोजिशन है. If OH is bonded with alpha, yes, first carbon, this is known as alpha naphthol. If OH is attached with this second carbon, it is known as beta naphthol. Okay. तो हमें कैजो कपलिंग में बीटा नेप्थॉल यूज करना है. One more thing. Yes, BDC salt will react with these compounds and remove a byproduct both. Yes, compound ये BDC salt का पार्ट, ये इनका पार्ट, दोनों एजो ग्रुप से कंबाइन हो जाएंगे. बीच में एजो ग्रुप रहेगा कपलर के तौर पे. नाउ BDC salt और फिनोल को OH से मैक्सिमम अवे हाइड्रोजन कौन सा है? OH के कंपेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप मैक्सिमम अवे हाइड्रोजन कौन सा है? ये पैरा पोजीशन वाला, ये ऑर्थो वाला OH से नजदीक है, मेटा वाला थोड़ा दूर है, और पैरा वाला हाइड्रोजन इज मैक्सिमम अवे फ्रॉम द हाइड्रोक्सी ग्रुप. ड्यूरिंग द रिएक्शन the hydrogen will combine with VDC salt which is maximum away from OH group, otherwise you can say NH2 group. NH2 group हो या OH group हो, उनसे maximum away जो हाइड्रोजन है वो BDC salts के साथ रिएक्शन करेगा. अब देखो ये BDC salt फिनॉल का पैरा पोजीशन का H, ये H और Cl will remove as a byproduct, and this phenol का portion will directly added to the nitrogen. It will gives benzene having N double bond N, phenyl and OH. If OH नहीं है तो उसको हम azobenzene बोलते हैं, but this is the azobenzene having hydroxy group in para position. That's why it is known as para hydroxy azobenzene. OH is present in para position compared to azo group. ये azo group के कंपेयर में this is ortho position, this is meta position, this is para position. This compound is known as a azobenzene, N double bond N. ये azobenzene है, इनका ये ऑर्थो, ये पैरा पोजीशन है, यहाँ OH ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज आइसोबेंजीन है, लेकिन जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट इन पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन. इट्स मार्केट नेम इज नोन एज ए ऑरेंज एजोडाई. मोतीचूर के लड्डू बनाने में जो कलर डालते हैं ये ऑरेंज कलर है, टेट्राजीन है, ये एरो ऑरेंज एजोडाई है. Second reaction with beta naphthol plus NaOH. बीटा नेप्थॉल में ये OH कौन सा हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन मैक्सिमम अवे फ्रॉम OH, क्योंकि ये थोड़ा नजदीक है, ये थोड़ा और दूर है, ये दूर है, ये मैक्सिमम अवे फ्रॉम द हाइड्रोक्सी ग्रुप. इट विल रिएक्ट विद BDC salt. HCl will remove as a byproduct. This portion will directly add to the nitrogen azo group. It will give the product just like this one. Benzene having N double bond N, the naphthalene and poor para, ये मेटा, ये बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है. Its IUPAC name, chemical name is para beta naphthyl azobenzene. Its commercial name is red azodie, जो रेड कलर है उसको हम रेड एजोडाई बोलते हैं. रेड कलर के वो कापड़ पर चढ़ाते जो भी. थर्ड रिएक्शन इज बिलोंग्स टू एनिलीन. एनिलीन इज बेसिक कंपाउंड. इफ यू वांट टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन उसको HCl में डिसॉल्व करना पड़ेगा. अच्छा, ये BDC सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा. मैक्सिमम ऑफ हाइड्रोजन पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है. इट विल कंबाइन विद Cl. HCl will remove as a byproduct minus HCl.
this portion will directly attach to the nitrogen. तो यहाँ देखो ये हुआ, ये पोर्शन को हम एजोबेंजीन बोलेंगे. दिस इज एजोबेंजीन, ये एजोबेंजीन है, लेकिन दिस इज एजोबेंजीन इन विच Na2 group is present on para position. That's why para amino azobenzene. It's a chemical name. Its commercial name is light yellow azodie. Then reaction with dimethyl aniline. Its solution, it will be soluble in HCl. Reaction करेंगे, para position का hydrogen Cl के साथ combine होगा. This portion will directly attach to the nitrogen. Our product will be this one. N-dimethyl para amino azobenzene. Dark yellow azodie, the commercial name. तो यहाँ 1 2 3 4 ORLD, oral D. Orange azodie, red azodie, light yellow azodie and dark yellow azodie. These are the structures. ये कॉमर्शियल नेम है और ऊपर इनके साथ केमिकल नेम है. यू कैन से यूपिक नेम. ये एजो कपलिंग है, दोनों साइड एजो ग्रुप के दोनों साइड कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है. दो सब्सटेंस, दो सिस्टम जुड़ती है थ्रू एजो ग्रुप. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एजो कपलिंग. एंड सेकंड रिएक्शन ऑफ BDC salts are in which yes displacement of nitrogen, उसमें GPB cells, वो we will see in next lecture.